हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज के हमारे वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रामर टॉपिक फॉर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश, दैट इज़ नोट मेकिंग. दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक्स, बट इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट then you will easily score 4 marks in the finals. So let's begin. What do you mean by note making? Note making क्या है? Note making एक reading skill है, because हम या तो कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर कोई लेसन है, कोई टेक्स्ट बुक है, कोई टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट है, ओके हम उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसमें से हम अपने खुद के नोट्स बनाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड नोट मेकिंग. इसलिए नोट मेकिंग एक रीडिंग स्किल है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल. दूसरा होता है नोट टेकिंग. ओके, नोट टेकिंग एक लिसनिंग स्किल है, बिकॉज हम जब किसी के लेक्चर या सेमिनार को सुनते हैं हम अपने खुद के नोट्स बनाते हैं उसके लेक्चर को सुनकर, ओके उसकी स्पीच को सुनकर. सो दैट इज़ वाई नोट टेकिंग एक लिसनिंग स्किल है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नोट मेकिंग. ओके, दैट इज़ the most important one. So we have to collect important points from the article or lesson. यानी कि जो भी पैसेज दिया गया है 200 से 300 वर्ड्स का, उसमें से आपको रीडिंग कर कर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स को सबसे पहले अंडरलाइन करना है. ओके, सेकेंड इज यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में हमें उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना होगा. नेक्स्ट इज हेल्प टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो नोट मेकिंग का प्रोसेस है उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं. वी आर एबल टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन मीन्स अगेन रिमेंबर बैक द सेम इन्फॉर्मेशन. ओके, नाउ नोट टेकिंग. Note taking is a listening skill. As I told you, we listen to somebody's lecture and we make notes. So first we have to listen to a lecture and a seminar and prepare notes on it. किसी के भाषण को सुनकर, स्पीच को सुनकर अपने खुद के नोट्स बनाना, दैट इज़ नोट टेकिंग. प्रॉपर लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट. यानी कि नोट टेकिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमारे पास अच्छे लिसनिंग स्किल्स नहीं हैं और अच्छे राइटिंग स्किल्स नहीं हैं तब. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द रूल्स ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग जो है, यानी कि जब हम किसी के नोट्स में से, रिटन नोट्स में से अपने नोट्स बनाते हैं, यानी कि पैसेज या पैराग्राफ में से वी आर मेकिंग आवर ओन नोट्स, दैट इज़ द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल. दैट टाइम व्हाट रूल्स डू वी हैव टू फॉलो. सबसे पहले तो पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लो. 300 to 200 वर्ड्स या फिर 250 वर्ड्स का पैसेज दिया जाता है, उसे अच्छे से पढ़ लो. सेकेंड इज जॉट डाउन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, अंडरलाइन, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप अंडरलाइन करोगे ताकि वो चीज़ आपके सामने हाईलाइट हो जाए. ओके, देन अवॉइड रिपीटेड इन्फॉर्मेशन. कोई इन्फॉर्मेशन बार बार किसी पैसेज में रिपीट हो रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप एक्सक्लूड कर दोगे. ओके, देन थिंक ऑफ एन अट्रैक्टिव टाइटल. कोई अट्रैक्टिव टाइटल आपको सोचना होगा अपने पैसेज के लिए. ओके, फॉर योर नोट्स. जैसे कि अगर आपका पैसेज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है तो आप खाली द ग्लोबल वार्मिंग बोल के टाइटल नहीं लिखोगे. यू विल राइट द ग्लोबल वार्मिंग अ ग्लोबल वार्निंग. ओके, समथिंग लाइक दैट. देन यूज सब स्किल्स ऑफ रीडिंग. सब स्किल्स ऑफ रीडिंग मीन्स देयर आर 2 सब स्किल्स ऑफ रीडिंग. 2 तरह के रीडिंग के स्किल्स होते हैं, एक होता है स्किमिंग और दूसरा होता है स्कैनिंग. सबसे पहले तो स्किमिंग. अब स्किमिंग जो है वो होता है कि हम पूरे पैसेज को पढ़कर ये समझ लें कि पैसेज है किसके बारे में. व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, किसके बारे में है. मेन टॉपिक इज सपोज पोल्यूशन, सो द पैसेज इज अबाउट पोल्यूशन. वो होता है स्किमिंग, कि एक आइडिया लेना पूरे पैसेज में से. सेकेंड रीडिंग स्किल है स्कैनिंग. जब हम कोई स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर सर्चिंग फॉर द वर्ड एनीमिया, ओके, इन द पैसेज. सो हम क्या ढूंढ रहे हैं, वो एक ही वर्ड को हम ढूंढ रहे हैं पूरे पैसेज में, तो उसे कहते हैं स्कैनिंग. तो हमें ये दोनों स्किल, स्किमिंग और स्कैनिंग, दोनों का यूज़ करना होगा जब हम नोट्स बनाते हैं. ओके, अगर कोई टॉपिक है जिसके सब टाइप्स बहुत सारे हैं, यानी कि उसके टॉपिक के नीचे बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दैट टाइम वी कैन यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. हम लोग पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे. देन वी कैन यूज़ इटैलिसाइज्ड और बोल्ड फेस वर्ड्स. इटैलिसाइज्ड यानी कि वो राइटिंग जहाँ पर आप completely towards the right side लिखते हो. ओके, दैट इज़ इटैलिसाइज्ड. एंड देन यू आर हैविंग बोल्ड फेस वर्ड्स, यानी कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को बोल्ड में लिखा जाता है,
तो वैसे भी आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने के लिए. ओके, देन लुक फॉर क्लूज एंड स्पेसिफिक वर्ड्स. आप पैसेज में देखो स्पेसिफिक क्लूज या फिर स्पेसिफिक वर्ड्स को या फिर एब्रीविएशंस को. ओके, लाइक जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का हो गया PM, you can find short forms like that. Okay, so you'll use abbreviations, specific words and clues. Methods of note making based on information provided. यानी कि नोट मेकिंग के देखिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको जो सही लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में. सो फर्स्ट मेथड इज़ बेसिक मेथड, जिसे हम स्पेशल मेथड भी कहते हैं. तो हर मेथड में फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइटल. ओके, टाइटल होना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव और कैची टाइटल होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद if you are just using the basic method, that time you can have 5 points if the passage is small, but maximum 8 points you need to write if the passage is big. Okay, and this is the most easiest and simple method. Okay, and title is compulsory because title के होते हैं half mark. So while making notes, just remember that कि your passage points should not look same like your notes. Okay, यानी कि ऐसा ना लगे कि आपने पैसेज में से ही सेम टू सेम कॉपी कर लिया है. यू हैव टू शॉर्टन द पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ रिटन अबाउट द बर्थ एनिवर्सरी और द डेथ एनिवर्सरी, दैट टाइम यू कैन जस्ट राइट डेथ, पुट अ हाइफन like this and then mention the date. Okay, 28 like that of December 2022, something like that. But don't write he died on, don't write full sentences. Okay, then now the second way of note making is tables. अब ये मेथड आप कब यूज़ कर सकते हो? जब आपको दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना है, या फिर आपको किसी चीज़ के फ़ायदे या नुकसान बताना है, या फिर प्रोज एंड कॉन्स बताना है. फॉर एग्जांपल, टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन या फिर है मोबाइल फ़ोन्स के इफ़ेक्ट्स एंड benefits. Okay, so that time you can have a table like this. Okay, and in this table you can just write the differences, the advantages, disadvantages, but remember that your table must be followed. After your title only you should make the table. Title is compulsory. Okay, whatever table you are making, title should be there. Now the third way of note making is tree diagram. Okay, tree diagram, again first we need to have the title. Give a specific and catchy title. After that only you'll make the tree diagram. Now tree diagram, when do we use? When we have to make a family tree, we need to write about the different members in the family. Or if you want to classify the animals, some animals are flesh eating animals, herbivore, carnivore. The same goes for plant classification also, when you're classifying the plants. Okay, at that time also you can have a tree diagram. Okay, so in rectangular boxes like these you can have your tree diagram. First the main heading will come over here, and then the categories and their sub points. The fourth way of note making is spider diagrams on mind maps. Okay, now we have done so many mind maps on our channel, you can always go and refer to them. Okay, so mind maps can be used. So first we need to have a title, and then over here you will mention the main topic, and then on the sides you can have a subtopic. Okay, subtopic, two subtopics related to it. For example, the main topic is pollution, so here you can have the effects, and over here you can have the solutions to pollution. Okay, so again then you can have sub ideas under it, and you can have sub ideas under this one also, solutions. So we use this type of spider diagram or mind maps when we are mentioning about cause and effects and solutions. Okay, now the fifth type of note making is pie diagrams. Now in pie diagrams, first you will have the title again, and then after that whatever information is given in the passage you are going to convert it into a pie chart. Okay, the pie chart looks like this. So whatever percentages you are putting in the pie chart along with the pattern, the same thing you will keep in these boxes. Okay, for example, cricket is 18, you have reading as 40, and movies as 42. Okay, 42 is movies, so you just mention with the percentage symbol. Okay, I'm not able to mention over here, so it is it looks like this. And we use a pie diagram basically to write about the sales of a company, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है. सर्वे कर रहे हैं हम पीपल की हॉबीज़ के ऊपर, चॉइसेस के ऊपर, वो कौन सा ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, कोला है, पेप्सी है, मिल्क है. ओके, सो
on all these topics we can have pie diagrams. Okay. Sixth type of note making is bar graphs. Again, first we need to have the title in a bar graph, okay, and then we need to draw and represent the information which is in the passage. We need to present it in the form of a bar graph, that is a pictorial representation. So again, we'll have x-axis and y-axis. So over here we'll mention about the number of people, that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50. This side again depends on the number of people present mentioned in the passage, okay. And then over here you can have the flavors, the choices, okay, like choco, vanilla, pista, blueberry. So all these are flavors of ice cream. So the title you can have as top 4 flavors of ice cream loved by people, or something else like this, but it should be a very catchy title, remember. Now let us see the uses. Now uses is the survey on people's choices, okay. When you're doing a survey on people's choices, or whether it is a cricket score, or we are presenting the population, at that time you can use this method of making graph, okay. The seventh type of note making is radical diagrams. So in radical diagram, again you'll write about the title first, and then you can have the information presented like this. So mainly the main 4 parts you can mention like this, okay. So basically the main difference between mind map and a radical diagram is that mind maps you can have, surrounded to the main topic, and over here these are only the main 4 topics which are very straightly presented in a radical diagram. So in the middle you are having MS Office, then you are having MS Excel, MS Word, Outlook, PowerPoint, all these topics. These are the main 4 ones. You don't have subtypes and all like a spider diagram in this, okay. Then let's see the uses now. Uses are that when you're mentioning about renewable sources of energy, at that time you can use this, or you're specifically mentioning about a category which is having only four or let's say more than that, but it should be straightly presented. You don't have subtypes. Now the last method of note making is headings and subheadings. Means first we should have a catchy title for our notes, and then you can have the subheading, with which you can have one point based on that subheading under it, and under that one point you can again have a very small point that is called subheading under it, okay. So we can have as many subheadings as possible. Again, I'm having a subheading 2, then a point under that subheading, and then again a very minor point, small point under the point 1, that is sub point. So similarly you can have subheading 2, 3, 4, 5, as many as you want, okay. Now when you're making notes, that time you can use short forms as I told you, but when you're using short forms, at the end of your notes you need to have a key box over there, so that whoever is reading your notes is able to identify your short forms. For example, in the notes you have used the short form of government, that is GOV. So you'll mention over here government hyphen and the complete spelling. Then info, information. ENGG is engineer. PM is prime minister, like that, okay. Now let's have a look at this question which came in the public examination. Read the following passage and make notes. Add a suitable title. Now here is a passage given to you. You need to read this passage and then underline the important terms and then create your notes. So let's read it. The brain has 3 main divisions, okay. So you found your heading now. The brain has 3 main divisions, each having its own particular function. The cerebrum is the largest and best developed section of the brain. So the first part of the brain is cerebrum. We found the first part, okay. It is made up of many areas containing cells that control various parts of the body. Some areas perform the function of directing muscular activity. So this is responsible for muscular activity. They allow the head to be turned, for example. Other areas are responsible for sight, hearing and speech. So you can also underline this: sight, hearing and speech. So cerebrum's work is muscular activity, sight, hearing and speech. That is the first part of the brain.
Okay, then the second is the cerebrum. Cerebrum is also the center of intelligence, and it enables human beings to reason and remember. Okay, the cerebrum is a small section of the brain below the cerebrum. Its function is to coordinate the movement of limbs and also control balance. So this is the main function: movement of limbs and control balance. The medulla oblongata. Now this is the third part of the brain. Okay, so first one is cerebrum, second one is cerebellum, and third one is medulla oblongata. So medulla oblongata is an enlarged area that connects the brain to the spinal cord. It serves to regulate the activities of the internal organs. So we found the first function of it, that is regulates the activities of the internal organs. It controls the beating of the heart and regulates all involuntary muscles. So we found the second function also, that is beating of the heart and regulates involuntary muscles. The part of the brain are highly specialized. Together they make up the complex organ that controls the nervous system. So together they control the nervous system. This is our final point, which connects us to all the 3 points. So let us see, these are just simple notes which have been made, that is used by the basic method they have used. The brain has 3 divisions. Okay, that is the first point. Okay, the heading you can have as parts of brain, and then you can have this notes. Point 1 as the brain has 3 divisions. Second point is the cerebrum, the cerebellum, the medulla oblongata. Okay, the cerebrum responsible to muscular movement, sightseeing, hearing and speech activity. This is the same one which we have underlined. The cerebellum responsible to coordinate the movement of limbs and controls balance. Okay, then the medulla oblongata responsible to regulate the activities of the internal organs. It controls the heartbeat and regulates all the involuntary muscles. Then all 3 parts of the brain together controls the nervous system. Okay, now the same information I feel you can easily put it in the form of a tree diagram. So this is a tree diagram on the topic, the divisions of the brain. So you are having the title on top, and then brain is the main topic, and then subtopics related to brain is cerebrum, cerebellum and medulla oblongata, the 3 parts of brain. And then below them you can have the functions. For cerebrum, it is muscular movement, sightseeing, hearing, and speech activity. For cerebellum, it is movement of limbs and controls balance. For medulla oblongata, it is regulates internal organs and involuntary muscles, also controls heartbeat. Okay, so over here in oblongata spelling, N should be there. Okay, just add up. And all these 3, cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata, they connect together. They control the nervous system. Okay, so you'll have a separate box down, and then you will connect all the points to this nervous system point. Okay, so in this way you can have a tree diagram also. And if you are more comfortable in having some other method, like a mind map, you think that information can be put up in a mind map form, then you can use other methods also. Okay, so it completely depends on the student, how he or she wants to make notes. You can make, and the examiner will give you marks for it. Okay.